Auzubillahiminash-shaytanir-rajim. Bismillahir-rahmanir-rahim. This is Ghazala Amin with PRM 702 within your MSPM program. और आज काफ़ी अच्छा वाला लेक्चर है इसलिए कि we are nearing the end of the project risk management. Today's lecture and the next week's lecture, 31 and 32, will be a summary and overview of project risk management. Project quality management already हमने ख़त्म कर लिया है, आपका मिड टर्म भी हो चुका होगा उस पर. अब जो project risk management है for your final examination, I'm not excluding project quality management, so project quality management भी होगा और project risk management भी होगा. अगले लेक्चर में मैं आपको थोड़ा सा वो बता दूंगी कि किस तरह का एग्ज़ाम आएगा, किस तरह की सेटअप होगा, मगर a little bit of an overview के focus on the PowerPoint slides. जो भी आपको PowerPoint slides मिली हैं उस पे फोकस कीजिएगा. ज़्यादा probability यही है कि you will be examined on some of those aspects. मिड टर्म का एग्ज़ाम जो था वो ज़्यादा शॉर्ट क्वेश्चंस थे, अब तक आप दे चुके हैं. फाइनल एग्जामिनेशन मैं कोशिश करूँगी MCQs प्रोजेक्ट क्वालिटी मैनेजमेंट के हों, प्रोजेक्ट रिस्क मैनेजमेंट के हों और 3 या 4 आपके क्वेश्चंस होंगे जिसमें आई विल फोकस ऑन प्रोजेक्ट रिस्क मैनेजमेंट एंड क्वालिटी मैनेजमेंट. मगर जो क्वेश्चंस आएंगे आपके, जो सब्जेक्टिव क्वेश्चंस हैं, वो पावर पॉइंट स्लाइड से ही आएंगे जो मैंने आपके साथ कवर किए हुए हैं. जो पेपर्स पढ़े थे, इट्स ऑलवेज अ गुड थिंग टू रीड देम, मगर आई विल ट्राई नॉट टू टेस्ट यू ऑन दैट. एटलीस्ट आपका जो सब्जेक्टिव क्वेश्चंस होंगे वो उन पेपर्स में से नहीं होंगे. सो अगेन जो पावर पॉइंट PPT स्लाइड्स हैं उन पे फोकस कीजिएगा. PDF फाइल्स हैं, इट्स ऑलवेज अ गुड रीडिंग मटेरियल, मगर देयर इज़ अ गुड प्रोबेबिलिटी दैट यू विल नॉट बी टेस्टेड ऑन इट. सो विद दैट लेट्स गेट स्टार्टेड. आज का और कल के जो लेक्चर्स हैं वो प्रोजेक्ट रिस्क मैनेजमेंट का एक तरह से ओवरव्यू है और हम PMI प्रोसेसेस को कवर करेंगे, मगर और भी बहुत सी टर्म्स एंड टर्मिनोलॉजीज़ की बात करेंगे और भी थोड़ा सा MCQs को भी मैं कवर करूँगी इंशाल्लाह ताला अगले वीक. तो उससे आपको ये हो जाएगा कि टेस्ट टेकिंग हैबिट्स हैं वो इम्प्रूव हो जाएंगी और आपको पता चल जाएगा कि किस तरह के क्वेश्चंस आएंगे और किस तरह के ऑप्शंस में से आपको सही ऑप्शन कैसे आपको सेलेक्ट करना पड़ेगा. सो विद दैट बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, लेट्स गेट स्टार्टेड. की डेफिनेशंस जो है प्रोजेक्ट रिस्क मैनेजमेंट में, सबसे पहले हमने बहुत सी अलग अलग बातें की थी, मगर फ्रॉम रिव्यू पर्सपेक्टिव सबसे पहले जब हम आइडेंटिफाई करते हैं रिस्क्स को, तो जितने भी चार्टर में अजम्पशंस हैं, एंड व्हाट डज द वर्ड अजम्पशन मीन? द वर्ड assumption mean that the factors that for planning purposes are considered to be true, real or certain. Assumptions affect all aspects of project planning and are part of the progressive elaboration of the project. Project teams frequently identify, document and validate assumptions as part of their planning process. Assumptions generally involve a degree of risk. अच्छा, अब चार्टर में हम हमेशा एक सेक्शन रखते हैं जिसको हम assumptions and constraints का नाम देते हैं. Assumptions are things that we believe will happen, मगर हो सकता है कि ना भी हो. And what does हो सकता है ना भी हो mean? That is what risk is all about. So the assumption is that the sponsors will always be there to support me in my hour of need. ठीक है, that is what the definition of sponsors are. So project sponsors or the customers, इनके लिए बहुत, अभी तक हमको ये समझ आ रही है कि इनके लिए ये बहुत हाई प्रोफाइल प्रोजेक्ट है. Delivery on time is extremely important to them. So I as a project manager would assume that जब ये प्रोजेक्ट स्टार्ट हो जाएगा, ये 8 महीने 1 साल का प्रोजेक्ट है, अगर मुझे किसी तरह की ज़रूरत पड़ी या मेरे किसी काम में कोई रुकावट आई, तो द प्रोजेक्ट स्पॉन्सर्स और द कस्टमर्स विल बी देयर टू सपोर्ट मी एज अ प्रोजेक्ट मैनेजर. ठीक, तो अब ये जितने भी अजम्पशंस हैं, दिस इज़ वन ऑफ द अजम्पशंस, राइट. जब हम रिस्क को आइडेंटिफाई करते हैं तो पहला हमारा ये काम होता है कि जितने अजम्पशंस होते हैं उसको हम रिस्क में डाल देते हैं और फिर हम उसका प्रोबेबिलिटी और इम्पैक्ट कैलकुलेट कर लेते हैं कि assumption was customer will be there to support me, however there is a risk कि पिछले प्रोजेक्ट में this customer wasn't very helpful. So अब क्या होगा
yes, there is a medium probability, मगर impact हो सकता है कि उसका high हो अगर customer sponsor हमको support नहीं करे, right? जितने भी assumptions हैं, सबसे पहले हम सारे assumptions को लेके अपने risk identification document में डाल लेते हैं. अच्छा, दूसरा जो word है, जो बहुत important word है project risk management में, वो है amount at stake. और ये सारे alphabetical order में हम जा रहे हैं, तो ये नहीं है कि ये बहुत ज़्यादा important है और वो नहीं, ये these are just some terms and terminology, some term and terminologies जिसको हम cover कर रहे हैं. I'm sure there will be many others also. The extent of adverse consequences which could occur to the project, also referred to as the risk impact. Amount at stake. How much are we at stake? और इसको impact या उसका calculation जो है उसको भी, उससे भी हम refer करते हैं. तीसरा जो word है वो है assumptions analysis, a technique that explores the accuracy of the assumptions and identifies risks to the project from inaccuracy, inconsistency or incompleteness of assumptions. और इसको हम कहते हैं assumptions analysis. Next word is the brainstorming. और ये जो word brainstorming है उसको हमने सबसे ज़्यादा कहाँ यूज़ किया था? सबसे ज़्यादा हमने वो यूज़ किया था जब हम identification of risk की बात कर रहे थे. Brainstorming is getting everyone and the right people in the room and let them scratch the surface, let them say loud things that they think can affect your project, है ना? Brainstorming का मतलब ये होता है कि using all the heads. अब इसके जो सही the book definition of brainstorming would be a general creativity technique, thinking out of the box, that can be used to identify risks using a group of team members or subject matter experts. Typically, a brainstorming session is structured so that each participant's idea are recorded for later analysis. मैंने आपको पहले भी ये बात बताई थी कि जब brainstorming या identification of risk हो रहा है तो we need to have some kind of facilitating capability, जो भी इस meeting को वो facilitate कर रहा है, so that people don't start talking about one particular idea. The reason and the purpose of the meeting is to collect as many situations as we can and then we analyze those later on. ठीक? So brainstorming is a very important aspect in identification of risks. उसके बाद जो है वो है business risk. The inherent chances of both profit or loss associated with a particular endeavor or line of business. Business risk वो होता है कि हम कितना आगे बढ़ सकते हैं. Is it a totally new project? अगर totally new project है तो risk है ज़्यादा मगर उसका payback भी ज़्यादा है. अगर ये बरसों से होता हुआ project है और हमने उसी product को दोबारा market में ला रहे हैं for example, तो risk भी कम है मगर उसका payback भी कम है. So that's the important idea. Checklist. A comprehensive listing of many possible risks that might occur on a project. Several types of risks have been encountered on previous projects are included. Checklist again, जो list होती है जिसको check हाँ ये भी apply होता है, ये भी apply होता है, ये भी apply होता है. आप lessons learned को ले सकते हैं, पिछले project से lessons learned pick up कर सकते हैं या things that are already in existence in your project management office, जहाँ से भी, मगर checklist बड़ा एक important concept है, just like the brainstorming session. अब हम बात करते हैं, because we are going in order, we talked about two type of reserves. और reserve is जिसको मैंने explain किया था, it would be like a pool of money set aside. That is never part of your project cost. ठीक है, work breakdown structure का cost नहीं होता है. ये इस example सबसे अच्छी ये है कि पानी आ रहा है मगर अगर पानी नहीं आएगा तो हमने बाल्टी में पानी लेके रख दिया है साइड में. बड़ा close to our heart है because हम सब living in Pakistan have encountered that situation. So we don't usually use that bucket of water unless we need to, right? There are two kind of reserves.
एक तो कंटिंजेंसी रिजर्व है और एक है मैनेजमेंट रिजर्व, दोनों की हम बात करेंगे। कंटिंजेंसी रिजर्व इज नोन अननोन, मैनेजमेंट रिजर्व इज अननोन अननोन। कंटिंजेंसी रिजर्व हम तब यूज करते हैं व्हेन सिचुएशंस दैट काइंड ऑफ could be planned to a certain degree and affect our project, but they were never part of our activity list. So that's contingency reserve, the amount of money or time is also money, needed above the estimate to reduce the risk of overruns of project objectives to a level acceptable to the organization. Contingency planning, अगर contingency reserve की बात की है, so what would be contingency planning? It's the development of a management plan that identifies alternative strategies to be used to ensure project success if specified risk events occur. Things that haven't happened, there is a good probability that they will never affect my project, but I have gone out and I've identified those as risks कि जब अगर वो होते हैं तो मेरे प्रोजेक्ट को हिट करेंगे, और जब करेंगे तो I will have this amount of money and these are the mitigation strategies. This is how I will react and this is how I will take care of this situation. ये चीज़ हो गई contingency planning. अच्छा, इसको आप जो सारे सुन रहे हैं उसको हाईलाइट कर लीजिए. I really, when you go back to your project risk management slides, PowerPoint slides, make sure you know how to take care and you know how to do the decision tree analysis. दो मैंने आपको PMI processes के lectures दिए थे, उसमें 2 या 3 examples दी थी. Make sure you highlight that, and I want, or everybody who's listening to me right now, I want that to be taken care of. You need to know how to solve those. So what is a decision tree analysis? It's a diagram that describes a decision under consideration and implications of choosing one or another of the available alternatives. It incorporates probabilities of risk and the cost of rewards of each logical path of events and future decisions. Project quality management में भी इस तरह की situation होती है, cause and effect analysis जिसको हम Ishikawa diagram कहते हैं. Risk management में भी होता है जिसमें हम probabilities बनाते हैं, 60% probability of this happening, 40% is this happening, फिर उनको हम branch कर देते हैं. For the purposes of the exam and for the purposes of any logical analysis, all of you who are listening to me need to be able to do this calculation by hand. Okay, the next one will be deflection, the act of transferring all or part of risk to another party, usually by some form, contract provision, जिसको हम outsourcing कहते हैं, insurance policy or warranty. This is also called risk transference. जब हमने बात की थी accept, transfer, उसी में ये वाला word आ जाता है deflection, और इसका दूसरा जो term होता है वो risk transfer होता है जिसको हमने already cover किया हुआ है. Moving on, the expected monetary value, the EMV. बहुत दफ़ा आपको EMV acronym भी नजर आएगा. So make sure you understand that EMV is expected monetary value, and that is money at risk times the probability or the likelihood of it happening. It's the product of an event's probability of occurrence and the gain or loss that will result. इसको हम अब पैसों के term में देख रहे हैं. For example, if there is a 50% probability that it will rain and the rain will result in a $100 loss, the expected monetary value, the EMV of the rain event will be $50. And how do you get that $50? It's 0.5, 50%, 0.5 times the monetary value which was $100. ठीक है? Make sure you understand, और ये acronym को याद रखना भी बहुत ज़रूरी है आपका. अच्छा, then what is the impact analysis? The mathematical examination of the nature of individual risk on the project as well as the potential arrangement of interdependent risk. It includes the quantification of their respective impact severity, probability
and the sensitivity to changes in related project variables. बहुत ज़्यादा words हैं, obviously हम review कर रहे हैं things that I have already covered, मगर ये risk rating अगर आपको याद हो, including the project life cycle. To be complete, the analysis should also include an examination of the external status quo prior to project implementation, as well as the project's internal intrinsic worth as a reference baseline. A determination should also be made as to whether all risks identified are within the scope of the project response planning process. बहुत सारे words हैं, इसको आप पढ़ेंगे, but just high level understand what an impact analysis is. Insurable risk, that is a particular type of risk which can be covered by an insurance policy, that is floods, fire, etc. Another word for insurable risk is also called a pure risk. That means when it happens, I am insured against it and somebody else will take care of it because I have continued to pay premium for this particular situation. अच्छा, हमने फिर अब आ गया management reserve terminology. It's a separately planned quantity used to allow for future situations which are impossible to predict. अच्छा, impossible to predict, अगर आप continuously earthquake zone में, and most of the time natural disasters जो होते हैं ना, वो management reserve में चले जाते हैं because they are very hard to predict. Things that have never happened can happen. मगर अगर आप continuously देख रहे हैं चीज़ें जो आपको affect कर रही हैं, फिर और there is a greater probability that it will happen, फिर हो सकता है वो contingency reserve में चली जाए. मगर things which are impossible to predict, जितनी बड़ी organizations होती हैं वो certain percentage अपना अलग करके रख लेती हैं and it's called management reserve. बड़े projects में 3 to 5% is usually the number, and these there has to be a very valid reason when you want to use this money. Most of the time there's an understanding between the customer and your organization to put aside this amount of money, but it is always the customer's money and you can only use it when something that is really hard to predict or almost unpredictable कोई ऐसी situation आ जाए जिसके लिए आपका project को अब additional time या additional money की requirement हो जाती है. Use of management reserve requires a change to project's cost baseline, right? Management reserves are not included, never included in project cost and schedule baseline. It's also used to manage unknown type of risk. Management reserve is unknown. Contingency reserve is known unknown. Both are separately planned quantities, not part of your baseline cost. Next we'll talk about the Monte Carlo analysis. It's a simulation technique जहाँ पे आप उसकी predictability को simulate कर रहे हैं. A technique that performs a project simulation many times in order to calculate a distribution of likely results. Then comes the word mitigation, taking steps to lessen risk by lowering the probability of a risk event, occurrence or reducing its effect should it occur. हमने जो फायर कंट्रोल का रिस्क रजिस्टर देखा था उसमें क्या था, हमने सारे रिस्क को आइडेंटिफाई किया था, उनकी प्रोबेबिलिटी और इम्पैक्ट को कैलकुलेट किया था एंड द प्रोडक्ट ऑफ इट गेव अस अ रिस्क रेटिंग. जो भी हाई प्रोबेबिलिटी या जिनकी भी रिस्क रेटिंग हाई थी उसको हमने क्या किया था, वी केम अप विथ सम काइंड ऑफ मिटिगेशन स्ट्रैटेजी, एक्शन प्लान्स. जब हमने एक्शन प्लान्स इम्प्लीमेंट कर लिए थे और उसको हम मिटिगेशन कह रहे हैं इस वक्त, जब हमने वो एक्शन प्लान्स इम्प्लीमेंट कर लिए तो लाइकलीहुड भी कम हो गई थी और हमारी जो इम्पैक्ट था वो भी कम हो गया. सब्सिक्वेंटली वी वर एबल टू लेसन द रिस्क रेटिंग. याद है वो लेक्चर नंबर 25 में हमने एक पिक्चर बनाई थी, पहले इतना इस तरह के कलर डिस्ट्रीब्यूशन थी और जब हमने वो मिटिगेशन स्ट्रैटेजी को इम्प्लीमेंट कर लिया था तो वो जो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिस्क थी from orange and red, it kind of came down to
yellows and blues and greens. That is what the mitigation strategy is. Action items to lessen the severity of the risk. Opportunities, हम बात करते हैं negative threats की और positive risk की. जहाँ भी word होता है positive risk, that means more business to us, a large extension of the project, future events or series of events that if they occur will have a positive impact on my project. Benefits which can be realized from undertaking a project as related to risk, positive outcomes of risk event. So opportunity का जब भी हम word use करते हैं, these are positive risks to the project which will help me in my business or my project. Reserve, अब because it's in alphabetical order हमने management contingency reserve की बात already कर ली है, so let's just read the definition of it. A provision in the project plan to mitigate cost and or schedule risk, often used with a modifier, for example management reserve or a contingency reserve, to provide further detail on what type of risks are meant to be mitigated. The specific meaning of the modified term varies by application area. और फिर what is project risk management? The whole ये जो पूरी class आपको पढ़ाई जा रही है, what is the storybook definition of project risk management? It includes the processes concerned with identifying, analyzing and responding to project risk. By this time I'm sure you know the 6 processes, the PMI 6 processes of project risk management. Identification हो गया, qualitative, quantitative हो गया, फिर analysis में चले गए, फिर monitoring and control हो गया. ये सारे जो 6 risk processes हैं, make sure you remember those. The probability and the impact matrix, a common way to determine whether a risk is considered low, moderate or high by combining the 2 dimensions of a risk. The likelihood or the probability and then the impact or the exposure of the project if it occurs. Risk rating, severity, अलग अलग नामों से इसको बताया गया है, मगर the whole product of likelihood and the impact. So what is the probability? Probability is the likelihood of a risk happening. The ratio of the number of chances by which an event may happen or not happen. High हो सकता है या low हो सकता है, to the sum of the chances of both happening and not happening. फिर एक और word है जो मुझे नहीं लगता है कि मैंने शायद use किया हो, किसी paper में पढ़ते हुए शायद use हो गया हो. It's a residual risk, a risk that remains after risk responses have been implemented. That means हमने risk लिया, उसके लिए mitigation strategies ली, उनको implement कर दिया, मगर थोड़ा बहुत risk फिर भी रह जाता है, जो issue बनके या change बनके आपके सामने आता है, और वो जो even after implementing some steps to lessen the severity of the risk, थोड़ा बहुत रह जाता है. Again lecture 25 में जब हमने वो assessment matrix बनाया था, तो ये नहीं था कि जब हमने रेड को इतने एक्शन प्लान बना दिए कि वो अब रिस्क ही ना रहा. Well, that is again you have to come up with situations, जो हमने पेपर भी पढ़ा था कि does it make sense to keep investing on situations that have not happened? आप थोड़ा बहुत प्लानिंग कर सकते हैं, मगर you cannot take it to the point that all your effort and a lot of money is being invested in situations that haven't occurred. So logically you have to think कि हमको कहाँ तक चलना है और कब रुक जाना है. तो जब रुक जाएंगे और जब पीछे रह जाता है, उसको हम कहते हैं, वर्ड यूज करते हैं, रेजिडुअल रिस्क. रिस्क क्या है? An uncertain event or condition that if occurs has positive, opportunity or negative threat effect on a project objectives. जब हम word threat use करते हैं negative है, जब हम उसको positive word use करते हैं तो वो है opportunities, business opportunities.
रिस्क मैनेजमेंट प्लान, जो पहला रिस्क मैनेजमेंट प्लान था, ठीक है, प्लानिंग में जो पहला जो आउटपुट था वो था रिस्क मैनेजमेंट प्लान. इट्स अ सब्सिडरी एलिमेंट ऑफ द ओवरऑल प्रोजेक्ट प्लान. It documents the procedures that will be used to manage risk throughout the project. PMI के 6 processes में जो पहला वाला था risk planning, उसका जो output था वो था risk management plan. It also covers who is responsible for managing various risk areas, how the contingency plans will be implemented, and how your reserves will be allocated. All of the who, what, when, how are covered in your रिस्क मैनेजमेंट प्लान डॉक्यूमेंट. उसके बाद जब हम आइडेंटिफाई और एनालाइज कर लेते हैं, फिर हमने एक और पीएमआई प्रोसेस था, वो था रिस्क मॉनिटरिंग एंड कंट्रोल. उसमें हम रिस्क रिस्पांस प्लान की बात करते हैं. अ डॉक्यूमेंट डिटेलिंग ऑल ऑफ द आइडेंटिफाइड रिस्क, इंक्लूडिंग द डिस्क्रिप्शन, द कॉज, द प्रोबेबिलिटी ऑफ अकरेंस, द इम्पैक्ट ऑन द ऑब्जेक्टिव्स, द प्रपोज्ड रिस्पॉन्सेज, ओनर्स एंड करंट स्टेटस. और इन सब के लिए जो एक वर्ड यूज हुआ था वो था रिस्क रजिस्टर. फिर वाला जो फायर कंट्रोल वाला टेम्पलेट था वो बहुत ही एक अच्छा प्यारा टेम्पलेट था, जिसमें हमने आइडेंटिफाई भी किया था और फिर उसमें मिटिगेशन प्लान्स भी डाल के फिर उसको रिकैलकुलेट किया था. एंड ऑल ऑफ दैट वी पुट इट इन अ पिक्टोरियल काइंड ऑफ डिपिक्शन, जिसको हमने रिस्क असेसमेंट मैट्रिक्स कहा था. मगर दिस वन डॉक्यूमेंट, द रिस्क रिस्पॉन्स प्लान, जिसको हम लोग बार बार रिस्क रजिस्टर कह रहे थे, मेक श्योर यू हैव दैट क्लियर इन योर हेड, सिर्फ फॉर नॉट जस्ट फॉर द क्लास पर्पसेस, मगर इंशाल्लाह जब आप लोग प्रोजेक्ट कीजिएगा, एक तो रिस्क मैनेजमेंट प्लान बहुत ज़रूरी डॉक्यूमेंट है. आइडेंटिफाई जब आपने कर लिया तो फिर ये जो रिस्क रजिस्टर होता है ना, ये वो डॉक्यूमेंट है जो सब्सिक्वेंटली चलता रहता है थ्रू आउट द प्रोजेक्ट लाइफ साइकिल. वर्क अराउंड, अ रिस्पॉन्स टू अ नेगेटिव रिस्क इवेंट, डिस्टिंग्विश फ्रॉम कंटिंजेंसी प्लान इन दैट अ वर्क अराउंड इज नॉट प्लान्ड इन एडवांस ऑफ द अकरेंस ऑफ द रिस्क इवेंट. वर्क अराउंड इज नॉट यूजुअली प्लान्ड एक्टिविटीज. वो यूज करके लेसन नहीं कर रहे होते हैं इम्पैक्ट, मगर द वर्क अराउंड is situation like a plan A or a plan B that we will follow. Okay. Threats as related to risk, the negative outcomes of a risk. अब हम बात करते हैं total uncertainty की, total certainty की. All information are known. Total uncertainty, no information is available and nothing is known. By definition, total uncertainty cannot be envisaged. Triggers, indications that a risk has either occurred or is about to occur, also referred to as risk symptoms or warning signs. Uncertainty, the possibility that events may occur which will impact the project either favorably or unfavorably. Uncertainty gives rise to both opportunity and risk. With this, ये जो हाई लेवल डेफिनेशंस हैं हमने वो सारे कवर कर लिए हैं, और अब हम विल गो फॉरवर्ड कि ये बाकी जो चीज़ें हैं उनको देखते हैं कि हमने और क्या चीज़ें कवर की हैं. और इसमें हम लोग 6 PMI प्रोसेसेस की भी बात करेंगे, मगर मेक श्योर यू अंडरस्टैंड, रीड थ्रू इट. मेमोराइज नहीं करना है आपको ये डेफिनेशंस, मगर समझना बहुत ज़रूरी है, बिकॉज दीज विल बी टर्म्स एंड टर्मिनोलॉजीज जिसको हम यूज़ करेंगे और आप भी इंशाल्लाह यूज़ करेंगे प्रैक्टिकल लाइफ में एंड फॉलोइंग ऑन. ओके, नाउ लेट्स स्टार्ट टॉकिंग अबाउट सम ऑफ द कॉन्सेप्ट्स दैट वर शेयर्ड विथ यू. प्रोजेक्ट रिस्क मैनेजमेंट कॉन्सेप्ट्स. सबसे पहला जो इसकी हमने अभी डेफिनेशन भी दी थी, सबसे पहला जो कॉन्सेप्ट है ऑब्वियसली विल बी प्रोजेक्ट रिस्क मैनेजमेंट. दिस इज अ सिस्टमैटिक अप्रोच और प्रोसेस of identifying, analyzing, and then responding to a project risk. It includes maximizing the probability and consequences of positive events and minimizing the probability and consequences of adverse events to the project objectives. ठीक है, रिस्क रेटिंग या सिवियरिटी की यहाँ पे बात हो रही है. जो नेगेटिव इवेंट्स हैं या नेगेटिव रिस्क हैं
के लिए हम स्टेप्स क्रिएट करेंगे ताकि उनका जो सिवियरिटी या रैंक ऑर्डर है उसको हम कम कर दें। मगर जो पॉजिटिव रिस्क है हमारे, थिंग्स दैट हैवंट हैपेंड येट, मगर जब होंगे तो हमारे लिए पॉजिटिव होंगे, उसको हम क्या करेंगे, उनके जो सिचुएशन है उसको मैक्सिमाइज करने की कोशिश करेंगे ताकि आवर प्रोजेक्ट gains the most benefit out of that situation. ठीक है, all that is project risk management. So what is project risk? When we talk about project risk, it's an uncertain event or condition that, if occurs, has a positive or negative effect on a project objective. It has its origins in the uncertainty that is present in all projects. It includes both threats, the negative effects, and then the opportunities, the positive effects, to improve on those objectives. A risk has a cause, and if it occurs, a consequence. Likelihood and the impact. Known risks are those that have been identified and analyzed and may be possible to plan for their occurrence and mitigation. Known risk वो होते हैं जो आपके risk register में लिख दिए गए हैं. अब unknown risk क्या है? It's practically or humanly impossible to capture all of the risk, because risk क्या होते हैं? Situations that haven't occurred, things that have not been captured or have never happened in the past on any of our projects. Those are the unknown risk. They cannot be managed, although project managers may address by applying a general contingency based on past experience with similar projects. Risks that are threats to the project may be accepted if they are in balance with the reward that may be gained by taking the risk. Likewise, risks that are opportunities may be pursued to benefit the project objectives. Organizations must be committed to addressing risk management throughout the project. One measure of an organization's commitment is its dedication to gathering high-quality data on project risk and the characteristics of the risk. अगर हम नीचे चलते हैं, यहाँ से भी एडिट करके इसको निकाल दीजिएगा. Now let's focus on the PMI's processes. जो पहला process है, that's the risk management plan. पहला process है. There are 6 processes. किस process group में है? Obviously, like the word it says, the risk management planning जो process है, it's in your planning phase or planning process group of the project life cycle. This is the process of deciding how to approach and plan the risk management activities for a project. It also includes planning for subsequent risk management processes, helps ensure that the level, type and visibility of risk management are commensurate with both the risk and importance of the project to the organization. इसमें inputs भी हैं जिसको हम cover करते हैं, और then we also have tools and techniques, और उसका जो output है, output जैसे मैंने आपको पहले अभी definition में भी बताया था, वो risk management plan है. हमने 2 आपके साथ शेयर किए थे बहुत अच्छे risk management plans. एक Accenture का था और एक जो था वो template था, जो उसको अगर आप लोगों को इंशाल्लाह मौका मिलेगा तो आप अगर risk management plan बनाएंगे तो you can always use that template to create a fairly high standard risk management plan. Risk management plan में आप वो सारी चीज़ें identify आपको करनी होती हैं कि what would be the process, how will I deal with it, what are the risk assessment, what is a risk assessment matrix. ये जो 1 to 4 या 1 to 5 है, what does that mean? What does 1 stand for? 2, 3, 4, 5, what are the colors of the risk assessment matrix? अगर आप वो use करेंगे. How will I go about creating a risk register? Brainstorming sessions होगा या हम उसको क्या करेंगे? ठीक है, ये सारी जो चीज़ें हैं वो risk management plan में आप identify करते हैं. एक और चीज़ जो मैंने आपसे कही थी वो ये थी कि ज़्यादातर जो established organizations हैं उनके पास PMOs होते हैं, project management offices होते हैं. Risk management plan is usually done at a high level. That means एक दफ़ा PMO मेहनत करेगी और एक risk management plan बन जाएगा.
पहली दफ़ा will be the hardest, it will take more time. उसके बाद क्या होगा कि with minimum changes you will just input requirements of your particular project with minimum updates and changes. You will have a risk management plan for your own project. ठीक है? So पहली दफ़ा जब वो create किया जाएगा तो obviously you will have to put in more effort, but subsequently वो जो effort होता है वो काफ़ी minimal हो जाता है. So risk management plan में क्या क्या चीज़ें होती हैं, inputs क्या होंगे? Project charter होगा, organizations risk management policies होती हैं, defined roles and responsibilities होती हैं, stakeholders risk tolerance बहुत important एक चीज़ है. What kind of project are you doing? Is it a simple project or is it complex? Large or complex or small or simple? मैंने फिर एक और बात आप लोगों को बताई थी, वो ये थी कि don't use the word small or large project. Use the word simple or complex. Because ज़रूरी नहीं है कि कोई large project है तो वो complex ही हो. Obviously थोड़ी बहुत complexities बढ़ जाती हैं because ज़्यादा लोग होते हैं, ज़्यादा stakeholders होते हैं. But other than that, you know, it could be a very small project, but this is the first time you're doing it. It is very complex. It's a new software that you're building an application on. Yeah, you know, बहुत से situations हो सकती हैं. Don't use small or large. Use simple or complex for defining and identifying projects. फिर एक और चीज़ जो बहुत important है वो है templates for organization risk management plan WBS and the WBS. ये सारी जो चीज़ें हैं, these are inputs to coming up with one thing, one output, that is the risk management plan. और जितने जो methods, tools and techniques हम use करते हैं, we can use brainstorming, making sure all identified upper stakeholders are involved and agree upon it. Defining meetings, identifying stakeholders is also a very important component in it. अच्छा, एक और जो वर्ड हमने यूज़ किया था स्टेक होल्डर्स में, अब जब हम रिस्क को बहुत स्टैब्लिश करके ऑर्गेनाइजेशन में यूज़ कर रहे हैं, एक जो पोजीशन अब हमको हमारे कानों में आना शुरू हो गई है वो है चीफ रिस्क ऑफिसर, द CRO. पहले 10-12 साल पहले ये जो टर्म था रियली वाज हार्डली I'd never heard of it, I'll be honest. मगर अब काफ़ी सारी कंपनीज ऐसी हैं, मल्टीनेशनल कंपनीज, who have seen the potential negative aspects of risk, और उन्होंने एक पूरी एक पोजीशन, एक स्लॉट क्रिएट की हुई है, और उस स्लॉट का नाम या टाइटल जो है वो है चीफ रिस्क ऑफिसर. दैट मीन्स वन डेडिकेटेड पर्सन फॉर मॉनिटरिंग, आइडेंटिफाइंग एंड हेल्पिंग प्रोजेक्ट मैनेजर्स टू डील विथ रिस्क अक्रॉस. अब इस ऑर्गेनाइजेशन में हो सकता है कि 10 या 12 प्रोजेक्ट्स चल रहे हो एक टाइम पे, या 4 या 5 चल रहे हो, डिपेंडिंग ऑन द साइज ऑफ द प्रोजेक्ट ऑर्गेनाइजेशन. दैट चीफ रिस्क ऑफिसर एक तरह का विल बी कवरिंग ऑल ऑफ द प्रोजेक्ट्स. उसकी अकाउंटेबिलिटी है मगर रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है. रिस्पॉन्सिबिलिटी फिर भी प्रोजेक्ट मैनेजर की है, मगर ये जो चीफ रिस्क ऑफिसर होता है, he or she is that person that can take care of situation and that can help and train people to deal with project risk management. ठीक है. अब risk management plan क्या होगा? बड़ी सारी चीज़ें होती हैं रिस्क मैनेजमेंट प्लान पे. आई डोंट वांट टू रीड थ्रू इट ऑल, आई एम श्योर आप लोग पढ़ेंगे. उसमें हम मेथडोलॉजी को भी आइडेंटिफाई करते हैं, रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी को भी आइडेंटिफाई करते हैं, बजटिंग एंड टाइमिंग को भी आइडेंटिफाई करते हैं, और अगर नीचे जाएं तो स्कोरिंग एंड इंटरप्रिटेशन, जिसको मैंने कहा बहुत इंपॉर्टेंट, 1 through 4. 1 का क्या मतलब है? इज इट अ लो प्रोबेबिलिटी और इज इट अ एक्सट्रीमली हाई प्रोबेबिलिटी? 5 क्या होता है ऑन अ स्केल ऑफ 1 to 5? कई दफ़ा हम 1 को क्रिटिकल कहते हैं और कई दफ़ा हम 5 को क्रिटिकल कहते हैं. ऑल दैट नीड्स टू बी आइडेंटिफाइड इन योर रिस्क मैनेजमेंट प्लान, ताकि ना सिर्फ आपको, आपके कस्टमर्स को या फिर सारी टीम को ये पता हो जाए कि हाउ आर वी असेसिंग, what are the lingos, what are the terms and terminologies that I'm using, who, what, when, how, all is covered under the
risk management plan document. फिर हम उसमें बात और भी करते हैं, we add on to it, we have thresholds in it. We also have reporting formats. अच्छा, इस पे एक मिनट इसको रीड कर लेते हैं ताकि आपको समझ आ जाए. It describes the content and the format of the risk response plan. It defines how the result of the risk management process will be documented, analyzed and communicated to the project team, internal and external stakeholders, sponsors and others. Top 5 रिस्क होते हैं जो वो हमारे प्रोजेक्ट स्टेटस रिपोर्ट में जाते हैं. You need to identify that in your risk management plan document. फिर ट्रैकिंग, how will I be doing it? सिंपल सा हो सकता है, statement हो under in your risk management plan that every 2 weeks the project manager will analyze or will look at all the possible risk register को जाके वो review करेगा या करेगी. उनको recalculate अगर करने की ज़रूरत है तो we can do that. Has the likelihood of something gone up or gone down? Impact gone up or gone down? ये जो reassessment होती है ना, we need to identify that कि क्या process होगा. Is it done once a month? Who's involved in it? Project manager की responsibility है along with the chief risk officer. Is it a defined meeting that is also in the communication plan under the title of risk management meeting or risk analyzing meeting, जहां हम सारे रिस्क को आइडेंटिफाई करते हैं. टॉप 5 जो रिस्क होते हैं उनको हम तो स्टेटस रिपोर्ट में डाल देते हैं, और अगर रिकैलकुलेट करना है तो वी कैन ऑल्सो रिकैलकुलेट दोज रिस्क एट दैट पॉइंट इन टाइम. ये जो सारी चीज़ें हैं अप फ्रंट इन द प्लानिंग फेज अभी कुछ नहीं हुआ है, सारी अभी जुबानी जमा खर्च या किताबों या डॉक्यूमेंट्स में इस वक्त सारी चीज़ें लिखी जा रही हैं. मगर if you plan to fail, then if you fail to plan, I'm sorry, then you plan to fail. That means अगर आपने planning phase में अपना काम नहीं किया है तो you are actually planning to fail. So that is the more important thing that all of us need to understand. एक हो गया risk planning जिसमें risk management plan आ गया. जो दूसरा process है PMI का वो है risk identification, and that is also in the project planning phase. हमने risk management plan document बना लिया, अब हम identify करेंगे risk को, लोगों को जमा करेंगे, brainstorming करेंगे, उनको documents देंगे, generally categorize करके हम लोगों से information लेंगे कि क्या क्या risk हो सकते हैं. It's the process of determining which risks are likely to affect the project and documenting the characteristics of each risk. Where feasible, participants in the risk identification process generally include the project team, the risk management team, subject matter experts, customers, end users, other project managers, the stakeholders and the outside experts. सबसे important meeting ये होती है पहली दफ़ा जब आप अपने प्रोजेक्ट के लिए सारे रिस्क को आइडेंटिफाई करने की कोशिश कर रहे होते हैं. फैसिलिटेटिंग एक्सपर्टीज इज एक्सट्रीमली इम्पॉर्टेंट. हमने एक डॉक्यूमेंट दिया था जिसमें हमने कैटेगराइज किया था कि एनवायरनमेंट है, इंटरनल रिस्क है, एक्सटर्नल रिस्क है. एक 5 या 6 पेजेस का डॉक्यूमेंट था. कोशिश ये करनी चाहिए कि आप सब को एक एक डॉक्यूमेंट पकड़ा दें ताकि दे स्टार्ट थिंकिंग ऑफ what could be a risk to this particular project. So they've done their homework before coming into this particular meeting. Purpose is very clear, to identify risk that can affect my project. Inputs to this particular process, risk identification, is your risk management plan. The project planning outputs. बहुत इम्पॉर्टेंट है रिस्क कैटेगरीज. क्या था हमने जब आरबीएस की भी बात की थी रिस्क ब्रेकडाउन स्ट्रक्चर की, तो ऊपर क्या था, इंटरनल था, एक्सटर्नल था, प्रोसेस था, यू कैन हैव टेक्नोलॉजिकल
या you can have process या project management aspects को भी ले सकते हैं. You have to have risk categories. हमने ये use किया था जो one of the earlier lectures, BU, business impact, environmental impact, PS, the process impact, ये सारे जो थी वो categories थी. So technical quality और performance risk हो सकते हैं, the project management risks हो सकते हैं to your project, organizational risk हो सकते हैं, external risk हो सकते हैं, या historical information हो सकते हैं. ठीक है, जिस तरह से भी आपको categorize करना है, you will categorize and you will identify it. जब ये दूसरा process हो गया, risk planning and then identifying risk. Methods used during risk identification. Brainstorming तो एक बहुत अच्छी टेक्निक है, मगर obviously और बहुत से हैं. Documentation reviews हैं. It includes a structured review of the project plan and assumptions, both at the total project and detailed scope levels, as well as reviews of prior project files and other informational sources. Assumptions from your charter, constraint, lessons learned from other projects, talking to other subject matter experts, getting information from subject matter experts or project managers who've done similar projects or have dealt with this particular customer. Ideal and invaluable source for identifying risk to your new project. Information gathering technique, इसको हमने पहले भी cover किया था, वो है सबसे पहला जो है वो brainstorming. Most frequently used risk identification technique. You get the right people in the room, you go out on the whiteboard and you start chalking down things that can affect your project. The goal is to obtain a comprehensive list of risks that can be addressed later in the qualitative and the quantitative risk analysis process. Under the leadership of a facilitator, the team generates ideas about project risk. Sources of risk are identified in broad scope, posted, categorized by type of risk, and then the definitions are sharpened. इस process में सबसे important ये चीज़ है कि do not start analyzing every risk. 1 मिनट से ज़्यादा नहीं spend करना चाहिए एक risk पे. You identify, then you move on. Okay? दूसरी जो टेक्निक है वो एक टेक्निक है, make sure you read about it. It's a Delphi technique. It means for achieving a consensus of experts on a subject such as project risk. Consensus may be reached in a few rounds of this process. This technique helps reduce bias in the data and keeps any person from having undue influence on the outcome. ये जो पूरा Delphi technique है, ये उस चीज़ को कंट्रोल करता है कि जो सबसे ज़्यादा बोलने वाला एक आदमी हो, या जिसकी जो बॉसी हो, या जिसमें इनहेरेंट लीडरशिप कैपेबिलिटीज़ होती है. एंड आई एम ट्राइंग टू बी सार्कास्टिक इन दैट टर्म, बिकॉज मीटिंग्स में या ब्रेनस्टॉर्मिंग सेशन में हमेशा कोई एक ऐसे हजरत या मोहतरमा ज़रूर होती हैं जो ओवर पावर कर लेती हैं दूसरों को. तो डेल्फाई टेक्निक इसलिए होती है ताकि हम वी गिव द सेम opportunity to everyone, or we don't get stuck into one idea. ठीक है? Project risk experts are identified but they participate anonymously. ठीक है? इसको आप लोग read कर लीजिएगा, because again in bigger organizations या जहाँ पे ज़्यादा authoritative kind of organizations होती हैं, उसमें brainstorming does not work. Interviewing है ना, एक बड़ी कॉमन सी चीज़ है. रिस्क आर आइडेंटिफाइड बाय इंटरव्यूइंग एक्सपीरियंस प्रोजेक्ट मैनेजर्स और द सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्ट्स. वो अब बाकी रीड कीजिएगा. नीचे जाते हैं द स्वॉट एनालिसिस. व्हाट इज अ स्वॉट एनालिसिस? इट्स द स्ट्रेंथ, वीकनेस, opportunities and the threat analysis. It ensures examination of the project from each type of SWOT perspectives to increase the breadth of the risk that are being considered. ये तो सारे हो गए टेक्निक्स. फिर हम चेकलिस्ट बहुत यूज करते हैं. We also use the assumptions analysis, जिसकी अभी हमने definition भी दी थी. The diagramming techniques.
प्लीज इसको अभी इस वक्त आप लोग हाईलाइट कर लीजिए. कॉज एंड इफेक्ट डायग्राम, ऑल्सो नोन एज इशिकावा और द फिश बोन डायग्राम. सबसे ज्यादा, और ये हमने कहाँ पढ़ा था, हमने ये प्रोजेक्ट क्वालिटी मैनेजमेंट में पढ़ा था. आप लोगों ने एक असाइनमेंट भी किया था इस पे, एजुकेशन पे या कैरेट ग्रोइंग इश्यूज पे, जो भी डिफरेंट आपने काम किए हैं. मगर व्हाट इज इट? इट्स दैट फिश बोन टेक्निक कि मल्टीपल कॉजेज हैव वन इफेक्ट, ऑल्सो नोन एज इशिकावा और द फिश बोन डायग्राम. और डायग्रामिंग टेक्निक्स में सिर्फ वो इशिकावा ही नहीं है, देयर आर सिस्टम और प्रोसेस फ्लो चार्ट. There are influence diagrams. It's a graphical representation of a problem showing causal influences, time ordering of events, and other relationships among variables and the outcomes. जब हम ये सब काम कर लेते हैं, risk identification, which is the second process right now, our outputs, our risks, रिस्क रजिस्टर में जो पहला जो या दूसरा कॉलम जो है उसमें हमने क्या किया, वी आर कमिंग अप विथ रिस्क्स इन इट. वी कैन ऑल्सो नाउ, वी आर ऑल्सो इन अ पोजिशन टू नाउ explain or identify triggers indicating that a risk has occurred or is about to occur. These are called the risk system, symptoms or the warning signs. Inputs to other processes. ये जो अब आउटपुट हमारे निकल रहे हैं, these are risk identification that may identify a need for further action in another area. For example, the WBS may not have sufficient detail to allow adequate identification of risk. हमने बस 4 घंटे की एक मीटिंग रखी थी and we assume that we are all set. जब हमने ये brainstorming मीटिंग की और हमने अलग अलग सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्ट्स को बुलाया, अब हमको पता चल रहा है कि वाओ, दिस इज नॉट इनफ. वी नीड टू फर्दर डेल्व डाउन इनटू अ लॉट ऑफ डिटेल्स. कस्टमर ने, एज ऑलवेज, अकॉर्डिंग टू द प्रोजेक्ट मैनेजर हु इज डेल्ट विद दिस पर्टिकुलर कस्टमर, हैवंट टोल्ड अस द होल स्टोरी. उन्होंने आधी इंफॉर्मेशन अपने पास रखी या रखी होगी, बिकॉज दैट इज देयर ट्रैक रिकॉर्ड. So now what is happening? If we as project managers have not put in enough time in our WBS, then the schedule will be incomplete or it will not be entirely logical. Okay? जब हमने risk को सारे को identify कर दिया, now we are coming to the third process, which is the qualitative risk analysis. The qualitative risk analysis is the subjective analysis. The high, medium, low is the process of assessing the impact and likelihood of the identified risks. Prioritize risk according to their potential effect on project objectives. It's a means for determining the importance of addressing specific risk and then guiding the risk response. Requires that the probability and consequence of the risk be evaluated using established qualitative analysis methods and tools. Risk हमने identify कर दिया और अब हम क्या कर रहे हैं, अब हम उसको analyze कर रहे हैं. There are 2 ways of analyzing it. The first way is a subjective analysis of risk, which is the qualitative risk analysis. और इसमें क्या होगा, we can actually do high, medium, low of what would be the probability of that risk happening, what would be the impact of the risk happening. Magar all of it, all the work that we are doing is basically subjective. Should be revisited during the project life cycle to stay current with the changes in the project plan. The inputs to the project qualitative analysis include the risk management plan, because that is our guiding post. That is like our little roadmap. We also, obviously, जो second set of input है वो है identified risk from the second process, from risk register का जो पहला या दूसरा column है. तीसरा जो input है वो project status है हमारा. फिर project type, is it simple, is it complex,
छोटा सा project है, is it and the consequences versus state of the art or the leading edge technology? You know, what is the probability, what's the impact of risk happening? Then the data precision. बड़ा important ये concept है. Describes the extent to which a risk is known and understood by measuring the extent of data that is available, as well as the reliability of the data. Are we just focusing on people telling me this, or I have time to actually go in and start digging deep to find out whether this particular risk applies to my project or not? Honestly, most of the time we will not have time as project managers to look at it. So this is the time when we need to go out and put an assumption based on the past history. I am making certain assumptions. Then the scales of probability and the impact. The probability scale and the impact scale. 1 through 5 सबसे आसान तरीका है, और मगर इसको हमने बताना होगा. Scale runs from no probability to 1, an ordinal scale representing relative probability values from very unlikely to almost certain, or a general scale with specific probability such as 0.1, 0.3, 0.5 could be used. Impact scale. Scale reflects the severity of its effect on the project objective. Impact can be ordinal or cardinal. अच्छा, ये जो चीज़ है ना, इसका आप information ले लीजिएगा कि क्या है ordinal, क्या मतलब होता है. Ordinal scales are ranked order values such as very low, low, moderate, high. और जो cardinal scales होते हैं वो होते हैं they assign values. So make sure you understand the difference between the ordinal and the cardinal values. Okay. अब आपने क्या पढ़ा है पिछले 15-16 lectures में? For you, I think, and for me also, for all the projects I have done, बहुत simple सी चीज़ है. अगर आप 1 through 5 number ले लें, और this is what it's actually saying, कि probability scale आपको identify करनी चाहिए, या impact scale आपको पता है. जो भी हो, you have to be very consistent between from one project to another. ये consistently आप वही use करना होगा आपको. And then assumptions. Methods that are used are the risk, probability and the impact. ये severity word use हुआ था. Risk probability is the likelihood that the risk will occur. Risk impact or consequence is the effect on project's objective if the risk event occur. The two dimensions of risk are applied to specific risk event, not to the overall project. That means you are looking at likelihood of that particular risk and then the impact of that particular risk on your project. आपने numbers identify कर दिए और फिर उसका product अब आपको लेना होगा. ठीक है? अब probability impact risk rating matrix, ये क्या चीज़ होती है? It's that very low, moderate, high. The risk rating is determined using a matrix, risk assessment matrix याद करें, and risk scales for each risk. हर risk की हमने likelihood और impact का जो product लिया था उसके बारे में इस वक्त हम बात कर रहे हैं. It could be a cardinal or an ordinal approach. The risk rating is determined using a matrix and risk scales for each risk. The organization must determine which combinations of probability and impact result in a risk being classified as a high risk, red, moderate risk, yellow, low risk, green, for either a cardinal or an ordinal approach. हमने जो आपको दिखाया था वो रिस्क असेसमेंट मैट्रिक्स दिखाया था, और उसमें जो कलर्स हमने यूज़ किए थे वो हमने यूज़ किए थे रेड, येलो, ऑरेंज था सेम, ग्रीन, एंड देन वी आल्सो यूज ब्लू. डिपेंडिंग ऑन व्हाट द प्रोडक्ट वाज हमने उसको अलग अलग बॉक्सेस में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया था. दिस इज व्हाट इट्स मीनिंग. Probability impact rating matrix is your
रिस्क असेसमेंट मैट्रिक्स, लेक्चर नंबर 25 का बिगिनिंग था ये. Project assumptions testing. Identified assumptions must be tested against two criteria: assumption stability and the consequence on the project if the assumption is false, and then your data precision ranking. It's a technique to use to evaluate the degree to which the data about risk is useful for risk management. It involves examining extent of understanding of the risk, the data that is available about the risk, the quality of the data, the reliability and the integrity of the data. और जब हम ये सारा काम कर लेते हैं क्वालिटेटिव रिस्क एनालिसिस, तो जो आउटपुट होता है हमारा, उसमें कई चीज़ें हमको नज़र आती हैं. एक तो रिस्क रेटिंग आ जाती है या रिस्क रैंकिंग आ जाती है, विच इज़ द प्रोडक्ट ऑफ द लाइकलीहुड एंड द इम्पैक्ट. देन वी लिस्ट आर प्रायोरिटाइज रिस्क. List of prioritized risk. Risk and conditions can be prioritized or grouped by number of criteria including risk rank or the WBS level. The urgency. Risk requiring an immediate response event versus those which can be handled later. हमारे risk जो हमने एक वो दिया था, scale दिया था, अगर वो red में या orange में है या वो blue में है. अगर red में है तो I need to have immediate action plans to minimize that. अगर वो blue में है तो yes, we can take care of it later. And then the risk impact type, cost, schedule, functionality or the quality. List of risks for additional analysis and management. Risks that are classified as high or moderate would be prime candidates for more analysis, including quantitative risk analysis and for risk management action. There are trends in qualitative risk analysis. As the analysis is repeated, अब जो ऐसे भी risk होंगे which we know that needs more time, उसको हमने site पे रख दिया और फिर week, 2 weeks later we will convene another meeting with the right people, with the right stakeholders and dig deep into those risks. And what are we going to do now? We can actually follow a trend. We can actually identify a trend. Trend in qualitative risk analysis result. As the analysis is repeated, a trend of results may become very apparent and can make risk response or further analysis more or less urgent and important. Either situation can happen जब आप ज़्यादा time उस पे spend करते हैं. I'll stop lecture number 31 at this particular point in time, and what we will do is in the next lecture I will continue on in the same format. अभी आज जो हमने 3 processes cover किए, एक तो हमने definitions को cover कर लिया, review को, and we did the risk planning, we did the risk identification, and we have done risk qualitative analysis. अब जो बाकी 3 प्रोसेसेस हैं उसको हम लोग अगले लेक्चर में कवर करेंगे, लेक्चर नंबर 32, एंड वी विल ट्राई टू रैप इट ऑल अप आल्सो फॉर यू. थोड़ा सा मैंने आपको एग्ज़ाम की के फॉर्मेट के बारे में भी बता दिया है, और अब आपका काम ये है कि आप लोग प्लीज़ गो बैक एंड रीड थ्रू इट. एज ऑलवेज इफ़ यू रीड थ्रू इट यू विल बी एबल टू रिटेन मोस्ट ऑफ इट. ये रिव्यू चल रहा है, लेक्चर नंबर 31 and 32 is all review of material that has already been covered, और ये बहुत valuable होगा आप लोगों के लिए when you are ready to take your terminal examination in few weeks inshallah ta'ala. So with that, Allah Hafiz to all of you. Make sure you read it. Lecture number 31 और 32 के लिए आप prepare होके आइएगा अगली दफ़ा, और फिर हम लोग आपको यहीं से आगे बढ़ेंगे, and we will start with risk quantitative analysis in the next lecture. All the best to you. Allah Hafiz.